dynamic session where we continue our discussions on the evolving nature of Indian folk art and its relevance in contemporary society. In today's session, we will have a series of academic presentations which will show diverse aspects of the theme, followed by brief discussion and concluding remarks by our chairperson. Each presenter is requested to keep the presentation within the allotted time, that is 5 minutes, to maintain the smooth flow of the session. I am Dr. Bhumika and I have the privilege of moderating today's session. Now, I welcome our respected chairperson, Dr. Anuradha Prasad, to chair this session and give us the valuable guidance. Welcome, ma'am. Now, we also have Dr. Chaitanya ma'am as the rapporteur who will be documenting the proceedings of the first session of day 2. Now, without further delay, I begin with the presentation. So, our first presenter is Dr. Abhishek Bhagat, Assistant Professor Senior Scale from Department of English, Dornagar College, Aurangabad. He will be presenting on the topic amalgamation of folklore and cinema with special reference to Kantara, a legend, chapter 1, 2025. I invite you, sir, for the presentation. Hello everyone, good morning. I am Abhishek Bhagat, Assistant Professor, Department of English, Dornagar College, Dornagar. Today, I will be talking on the topic amalgamation of folklore and cinema with special reference to Kantara, a legend, chapter 1. Now, when we speak of folklore, the first confusion that comes to our mind is the differentiation between the folk art materials and folklore as a separate academic stream. If we look at it academically, then the history of folklore studies is not older than 150 years, but the folk art materials have been in existence since time immemorial. Now the term folklore has been coined by William John Thoms, who, when he was corresponding to this journal called the Athenaeum, he used this term folklore for the first time. And he also used it under this pseudonym, that is Ambrose Martin. The study of folklore goes back to the philological study of Grimm's brother, that is Jacob Grimm and Wilhelm Grimm. They did this thorough study of German mythologies, the books they came up with. Books like Deutsch's Mythology, Kinder and Hausmarchen. These are the seminal works in this field of folklore studies. And their approach was influenced by Johann Gottlieb von Herder. Now this nationalistic sentiment
movies and screening of movies and all, they come to these things earlier than they get exposed to the folkloric materials. Now, in our time, they do not get this appeal and charm of folk art. Even if they are knowing about these things, that too comes through the medium of digital things, digital gadgets and other such applications. Now I have chosen this feature film, motion picture, that is Kantara. And this Kantara is a charismatic blending of cultural and commercial elements. Now here we find this tradition of coastal Karnataka region called Tulunadu, and they are having this practice of worshipping the divers. Divers are nothing but the divine spirits who embody the elements. And here in this film we have, there are many, but primarily we have the presence throughout the movie. There are three. First one is Panjurli, second one is the Huli Deva, and third one is the most appalling one, that is the Guliga. Now these three divine spirits perform three different purposes. Panjurli is seen as the spirit of preservation, which preserves the entire existence of the Kantara people. And the Kantara is a fictional setup, which is not in the geographical maps. And that is true to the spirit of folklore, that we have places which are fictional. And this Huli Deva, it is seen as the guardian angel. The spirit which always guides the protagonist whenever he is in a precarious situation. This is the Daiva which guides him through the dangerous situations. And the third one, Guliga. Guliga is the spirit of punishment. Whenever there is this wrongdoing and people are treading towards the path of adharma, this Guliga appears, possesses people and provides immense raw energy, which also helps in meting out the justice. And his ways are often violent. Now what do we get through this tradition of Daiva worship? Here it upholds the value of devotion. Now devotion in our world may seem like an idea which is obsolete, but if we look at it from the perspective of having the ability to remove the anxiety and doubt, then we can understand the value of this devotion of the mind, because it helps us have the single-minded focus. And in conclusion, I would like to say that I feel very glad to be able to present this thing, but I would have felt unbound happiness if I could, come up with some folk art performances, because I feel personally that knowing about the folk art is one thing, but being able to perform something, that is a notch higher. So with that, I will conclude. Thank you for your attention. Thank you so much, sir. So our next presenter is Dr. Ifat Shaheen. She is Assistant Professor from PG Department of English, Mother University. She will be presenting on the topic Folk Literature and Culture Reflection on Ecological Consciousness. Welcome, ma'am. Good morning, everyone. I am Dr. Ifat Shaheen, Assistant Professor from Mother University, Bodh. The title of my paper is Folk Literature and Culture, Reflection on Ecological Consciousness. The depiction of a relationship between nature and human may be traced back
varies with an age. The close relationship with the environment is reflected in various practices, religious beliefs, and storytelling traditions. Among these cultural forms, literature plays a significant role in preserving and transmitting ecological knowledge from time immemorial. Folk literature frequently addresses ecological concern and the preservation of the natural resources in the forms of songs, ballads, dance, dramas, and many more. Folk literature includes folk tales, myths, songs, proverbs, and legends that are passed orally from generation to generation. These narratives often portray animals, practices, natural landscapes as central element of this story. Through the symbolic representation of the moral lessons, they communicate the importance of respecting nature and the maintenance of the ecological balance. In India, many traditional narratives emphasize harmony between the human and the natural world. Ancient Indian texts, including folklores and mythological stories, depict nature merely as a resource, but as a living entity deserving respect and protection. Indigenous knowledge systems embedded in these narratives highlight the need to preserve the biodiversity and live sustainably within the environment. The folk literature functions as a cultural archive that preserves the knowledge, beliefs, and practices of a community. In traditional societies where formal scientific knowledge is limited, ecological understanding was transmitted through stories and oral tradition. Folk tales often include information about animal behavior, environmental cycle, and sustainable resources. The study of folklores have shown that traditional narratives contain valuable ecological issues that help communities to maintain the balance within the nature. Folk tales, proverbs, and myths often teach respect for the animals, forests, and rivers while discouraging harmful practices and over-exploitation of the natural resources. For example, many Indian folk traditional emphasis the sacredness of the trees, animals, water bodies. Such beliefs encourages communities to protect forests and wildlife. These storytelling ecological values are internalized by the individual from childhood, shaping attitude towards nature. Furthermore, folklore serve as a tool of environmental education. By embedding the message within engaging narratives, folk literature communicates complex environmental ideas in simple and memorable manner. Stories about animals cooperating with each other or suffering due to greed illustrate the importance of maintaining ecological balance. Thus, folk literature not only entertains but also functions as a cultural mechanism in transmitting environmental ethics and sustainable practice. Among the most influential work of folk narratives, literature is the Panchtantra, a collection of the moral and the political stories told through animal characters. These stories illustrate wisdom, ethics, and practical knowledge about the society. The Panchtantra has been translated into more than 50 languages and hundreds of versions across the world, making it one of the most widely circulated works of the Indian literature. Although the Panchtantra is often studied as a work of the political and moral instruction, contains significant ecological insight. The Panchtantra occupies a position in Indian literary and cultural history. Traditionally attributed to the scholar Vishnu Sharma, the text was designed to teach the principle of the governance, diplomacy, and the practical wisdom through the word Panchtantra, which literally means 5 principles or the 5 treatises, referring to the section of the book that deals with different aspects of the human behavior. Though the stories are communicated through the animal character, but the moral lessons which are given through them imbies the human connectivity with the nature. Since I have to cut down my paper, so I cannot narrate the stories, but one example which I'd like to give, for example,
example is the story of a monkey that lives on a fruit tree near a river and befriends with a crocodile. They share fruit with the crocodile, symbolizing harmony between the species. However, the crocodile attempts to betray the monkey reflects how greed disrupts the natural relationship. Such are the moral lessons which are described through these stories. So at conclusion, I would just say the study of the folk literature not only enhances our understandings of the cultural tradition, but it also provides valuable perspective for addressing modern ecological concerns. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now our next presenter is Dr. Sanjay Kumar, Assistant Professor from PG Department of English, Magad University, Gaya. He will be presenting on the topic Regional, Subaltern and Marginalized Folk Traditions in Bihar. Welcome, sir. Good morning to all present in the hall. My name is Dr. Sanjay Kumar, Assistant Professor, PG Department of English, Magad University, India. The topic of my present is Regional, Suburban and Marginalized Folk Tradition in Bihar. So three terms are there: regional, subaltern and marginalized. So I will elaborate these three terms in my presentation. The regional folk tradition that encompass Mithila painting, Chhat festival song and folk theatre, that is Videsia, that is very much prevalent in India. And in the subaltern folk tradition, the tradition is prevalent in the Dalit community of Bihar, particularly in the south region of Bihar, that was in Jharkhand previously. And the women ritual, that is Sohar and Gosam song, that is prevalent in the middle of Bihar and Bhojpuri region of Bihar. And marginalized folk tradition, that is of the tradition of tribal community, particularly to Santhal and Koram community in Bihar, now in Jharkhand. And Muslim folk expression, that is Qawwali and Marsiya. Now coming to the first regional folk tradition, that is Mithila painting. As you all know, it was in the Mithila region of Bihar and prevalent in the Madhubani district. And it was the long term Mithila painting, popularly known as Madhubani painting. It was practiced mainly by women of the Mithila region and employ natural dyes and intricate geometrical pattern to depict regional themes, social ritual and daily life. And this traditional painting adorned the ball and courtyard of the home. Previously used to adorn the ball and the courtyard. Now it has come to the paper in the hall. So these are the changes and suiting to the theme. Now Chhat festival song, that is prevalent everywhere in Bihar and some part of the Uttar Pradesh also. The offering is done to the god Sun, and it is collective performance of the Chhat song enhance the spiritual atmosphere, foster community solidarity and serves as a living archive of regional value and beliefs. Though this music, Chhat Puja not only ensure the continuity of a unique cultural heritage, but also empower women as a principal bearer and transmitter of the tradition. And folk tradition that you might have been knowing, Videsia. Videsia means migrated to विदेश. पहले लोग बिहार के लोग कलकत्ता में जाकर के नौकरी करने जाते थे, हमारे दादा खाने बनाते थे, वो कई सारे लोग विदेश में जाते थे, तो उनकी याद में गीत लिखे गए हैं, ड्रामा में लिखा गया है। और विदेशिया जो पर्टिकुलरली भिखारी ठाकुर का बनाया हुआ folk थिएटर है, भिखारी ठाकुर जो अवसर कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी, तो उनके तर्ज पर बनाया गया गीत है जिसको विदेशिया कहते हैं। इसमें ट्रेडिशन का रिफ्लेक्शन है। द हॉलमार्क ऑफ विदेशिया परफॉर्मेंस in their dynamic blend of music, dance and satire, which makes the form accessible and easy for the regular audience. Song rich in Bhojpuri idioms and emotions are interspersed with the witty dialogues, dance
dance, sequence, and serve social community. And it is not just entertainment, it is portrait a vehicle for social critique. Plays often address issues such as caste discrimination, gender inequality, and exploitation of the poor, using humor and satire to inspire reflection and dialogue among the audience. And coming to the subaltern folk tradition, you might have heard the name of Alhaudal or Lorikayan, Rani Resma Chuharmal Kagi. So these are the folk tradition of the Dalit community, which is sung in folk tradition of the Dalit communities. And they function as a vital space for articulating subaltern perspective and contesting the narrative imposed by the dominant caste. Through the invocation of a heroic figure like Saldesh and the celebration of collective resilience, the song fosters a sense of pride and agency among marginalized groups. And the women ritual song, you might have heard Sohar and Gosaun. Sohar is particularly sung at the birth of a boy, either son or daughter. And this song are performed duly and associated with the domestic milestone, including naming ceremony and the first feeding of the child, particularly at the end of 6 days or 27 days. And Gosaun song, it is particularly sung at the Jitya. Jitya is a famous festival in Bihar, particularly celebrated by the women of Bihar. And this ritual song are not merely act of devotion but also a space for articulating communal identity and negotiating social hierarchy. The act of coming together to sing and often in the courtyard or in the riverside creates opportunity for women to share experiences, transmit cultural knowledge and collectively navigate social challenges. And tribal tradition, two famous tribals are there, that is Santhal and Oraon. They are particularly Adivasis and their tradition are preserved in form of a song, that is Sohrai or Baha song. These are particularly sung in the south part of the Bihar, now mostly in Jharkhand. They use tamak, a type of kettle drum, and tamdak, that is a hand drum, to use and sing the song. Another community is Orama. They use traditional dance such as Karma and Sarvu. These are the famous dance done by the Dalit people. And some Muslim folk expression are also in Bihar, like Kabbali and Marsiya. Marsiya song, सिया कम्युनिटी के द्वारा मुहर्रम के अवसर पर इसको गाया जाता है इमाम हुसैन के याद में. So, and some of the tradition, that is like third gender tradition, that is Hijra community, they used to perform badhai at the birth of a child, and these are very prevalent in Bihar, almost every part of the Bihar. And so, in concluding my paper, this paper is about the folk tradition spanning regional, subaltern and marginalized community, represent a dynamic, pluralistic and open context terrain of the cultural expression. So these traditions are not static relics of the past, but living practices that embody the aspiration, struggle and identity of Bihar diverse population. Thank you so much, sir, for your interesting presentation. Now our next speaker is Dr. Shobha Kumari, Assistant Professor from Vishwavidyalaya Angika Vibhag, TMBU. She will be presenting on the topic Angika Lok Kalaon ka Bhavishya, Parampara, Sankat और संभावनाएं. Dr. Shobha Kumari. I think she is not here. So we will move on to our next speaker, Anamika Kumari, Research Scholar from PG Department of Law, TMBU, Bhagalpur. She is also not here. So moving on to our next speaker, Rashmi Sinha,
research scholar from PG Department of English, Magad University. She will be presenting on the topic Tradition and Culture in the Writings of Ruskin Bond with special reference to Himalayan folk life. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity. And good morning, everyone, and the relevant personnel sitting on the dais. So, as ma'am has suggested, in fact, given me my introduction about the traditional culture in the writing of Ruskin Bond with special reference to Himalayan folk life. And Ruskin Bond is considered to be the most simple person, as he has written in a very simple language and most beloved among the children, and not only children with us also. So the simplicity matters, and the simple life of Himalaya, that also matters in his writing. So the paper explores about how Ruskin Bond writing preserve and interpret Himalayan folk life through literary narratives by examining depictions of rural traditions, social customs, festivals, and mythic imagination. The discussion demonstrates how Bond's fiction becomes a cultural document of mountain communities. His work transformed everyday life into literary testimony of India's living tradition, revealing how local culture sustained emotional belongings, ethical relationship, and a deep sense of harmony between human beings and the natural world. The key words which are included in this paper are tradition, culture, Himalayan folk life, rural traditions, Indian customs, Ruskin Bond, folk beliefs, and mountain ecology. So, effort time was also discussed previously about the ecology and the other things. So, with the paucity of time, I'll be taking little, So, the Indian literature in English has gradually evolved into a vibrant field that reflects the country's multilingual, multicultural, and geographically diverse society. Among the writers who have contributed significantly in this tradition, Ruskin Bond remains one of the most beloved chronicler of everyday Indian life. His writing evokes the landscape of the Himalayan region and the cultural world embedded within. Through short stories, novels, essays, and memoirs, Bond offers a literary portrayal of rural communities where tradition, customs, and local beliefs continue to shape the rhythm of life. The concept of culture is equally significant in understanding Bond's literary universe. Anthropologist Clifford Bridge defines culture as a system of inherited conception expressed in symbolic form by means of which people communicate, perpetuate, and develop their knowledge among the attitudes towards life. Bond's narrative frequently illustrates such a symbolic form through religious rituals, village festivals, seasonal celebrations, and the simple custom of hospitality and communal life. The Himalayan region provokes the geographical and emotional setting. This is very important because the hardship of the life in the Himalayas are very difficult. So mingling with people and exchanging their views, their thoughts and celebration of everything, of the festivals, that really matters to them because of the hardship. So within this environment, rural traditions become an essential element of social identity. The concept of folk life refers to the everyday cultural practices of ordinary people, especially in rural and traditional communities. So it has been described folk life as the collective expression of customs, oral tradition, beliefs and rituals that emerge from communal experiences rather than institutional authority. Obviously, this is very true because all the traditions, that is always, down-handed to the next generation. And by storytelling, by telling stories about our forefathers, that also reflects in the story. So, and that's how we really come to know about our identity, from where we belong, what are our traditions and cultures. So that's how we can express it. So अगर हम आज के डेट में बोले हम अगर बिहारी हैं तो हमारा एक कल्चर है, and that we represent. Yesterday also we have represented it in a very nice manner. So that is a very evoking thing that we should observe in our things. So the rural
social practices in Himalayan villages, one of the most striking features of bond writing is a detailed portrait of social customs that has shaped life in the Himalayan villages. In his writing, In Delhi is not far, he provided vivid depiction of the funeral processions moving slowly through a dung street. So this is like Janm and Mrityu हमारे साथ साथ चलता रहता है. Okay, so I need to really quit this session now. So he has mostly focused on the festival and the rural celebration as cultural concept, folk beliefs, myth and oral storytelling. Nature and landscape has been described beautifully in all his work, and the cultural environment, human relationship and ethical simplicity of village life was well written and very much written in a simplest way. So Bond's simple narrative style enables him to portray complex cultural realities with clarity and empathy. His work highlights the dignity of ordinary lives and celebration and enduring values of kindness, community and respect for nature. In doing so, Bond contributes significantly to Indian English literature by documenting a unique regional culture that might otherwise remain unnoticed. To conclude, ultimately, the writing of Ruskin Bond serve a literary testimonies to the tradition and cultural echoes of the Himalayan world. The stories remind readers that the folk culture is not merely a relic of the past, but is a living heritage that continues to shape human identity and social relationships in the mountains. Thanks for the patient listening. Thank you very much. Have a good day. Thank you so much, ma'am, for the interesting talk. Now moving on to our next speaker, Suraj Kumar Prasad, research scholar from PG Department of Music, TMBU. So moving on to our next presenter, Kavita Kumari. She is research scholar, JP University, Chhapra. I think she is not here. So moving on to the next participant, Pragati Mishra, research scholar from TMBU. Moving on to our next speaker, Nityanand Mishra, research scholar from Mathili Department, TMBU. He will be presenting on the topic Mathili Lok Sahitya, Dasha or Disha. सबसे पहले धन्यवाद मुझे यह मौका प्रदान करने के लिए आप सभी लोगों का, और जितने भी विद्वज्जन हैं सबसे पहले उनको प्रणाम। मैं नित्यानंद मिश्रा और आज मेरा शीर्षक है इस पेपर का मैथिली लोक साहित्य, दशा और दिशा। मैथिली पुराने विदेही जनपद की भाषा रही है। मैथिली आज के संदर्भ में भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची की भाषा भी 90 के दशक में शामिल की गई। मैथिली में अगर लोग शब्द का प्रयोग देखते हैं कई मतलबों में होता है, लेकिन इसके दो सबसे व्यवहारिक मतलब हैं। एक है दुनिया यानी जहान यानी सभी के बारे में, और आदमी दूसरा है लोक। मैथिली में लोक का मतलब आदमी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फोक शब्द का प्रयोग आम आदमी के लिए इंग्लिश शब्द फोक के अनुवाद के तौर पर किया जा रहा है। जब लोक शब्द को साहित्य के साथ मिलाया जाता है तो लोक साहित्य बनता है। तब इसका मतलब समाज का एक ऐसा वर्ग होता है जो अमीरी, संस्कृति, अभिजात्यवाद और ज्ञान की चेतना से पूरी तरह अछूता रहा है। समाज का यह वर्ग जब लिखकर साहित्य का सृजन नहीं कर सका तो यह समाज, यह वर्ग अपनी प्राकृतिक प्रतिभा की वजह से
इसे बोलकर जीवन प्रदान करता है, तभी वह लोक साहित्य की श्रेणी में आ पाता है। और इस प्रकार से यह लोक साहित्य एक कंठ से दूसरे कंठ तक सही सलामत आज तक पहुंचता रहा है। रचना के आधार पर अगर मैथिली लोक साहित्य की बात की जाए तो साधारणतः 3 वर्ग में विभाजित करते हैं, जिसके तहत गद्य लोक साहित्य में वे भेद शामिल हैं जो पूर्णतः कथित या पाठ्य ग्रंथ पर आधारित हैं, यथा लोकोक्ति, कहबी, मुहावरा, लोकश्रुति व किंवदंती। पद्य लोक साहित्य में लोक साहित्य के वे रूप शामिल हैं जो गेय और पदावली आधारित हैं, जैसे कि फकरा, वचन, लोकमन, पिहानी या बुझावली। ये सभी मैथिली लोक साहित्य के भाग रहे हैं। इसके अलावा लोक गाथा, गाथा गीत, लोकगीत और लोकनृत्य। इसके अलावा हम जब मिश्रित साहित्य की कैटेगरी में इस वर्ग में लोक साहित्य के भेद को देखते हैं तो उसमें शामिल है गद्य के साथ साथ पद्य का इस्तेमाल। इसका भी प्रयोग हम लोगों को साधारणतः मैथिली लोक साहित्य में देखने को मिलता है, जैसे मैथिली लोक नाटक एवं मैथिली लोक कथा। जब मैथिली लोक साहित्य का विकास होता है, यानी 1910 के बाद से जब देखते हैं कि हम लोग उपन्यास का मैथिली में विकास होता है, बाकी भाषाओं की तरह मैथिली में उपन्यास का विकास पत्रकारिता के दौर के बाद आरंभ होता है। और जब उपन्यास का वर्ग तैयार, पाठक वर्ग तैयार होता है तो उसी के तर्ज पर मैथिली में लोक साहित्य का एक बहुत बड़ा वर्ग भी तैयार होता है। इसमें जो बिहार के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक नाम ध्यान में आता है, ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म, डॉक्टर ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म। उन्होंने जितना लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत के संदर्भ में काम किया है, शायद ही बिहार में कोई ऐसे मूर्धन्य विद्वान होंगे जिन्होंने उतना काम कर दिखाया। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। जो बिहार की संस्कृति है, मैथिली संस्कृति है, उसके लोक साहित्य में प्रचलित लोक गाथा, लोक कथाओं को साहित्यिक पटल पर उभार कर रखने में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म जी का है। मैथिली लोक साहित्य के दर्शन के केंद्र में इंसान की आत्मा का वास रहा है और इस बात को सर्वदा सिद्ध किया है डॉक्टर ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म ने। उन्होंने जो लोक देवता प्रचलित रहे हैं मैथिली संस्कृति में, जो लोगों के बीच में जिनका वास रहा है, उसको नायक के तौर पर उभार कर लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आम मैथिल जनमानस के दुख, दरिद्रता, सुख, सौभाग्य, शोषण, उत्पीड़न, श्रद्धा, भक्ति, वाणिज्य, व्यापार आदि की अभिव्यक्ति को सम्मिलित करते हुए उन्होंने लोक गाथा, लोक कथा को आगे बढ़ाया। और अब मैं अपने पत्र को समग्र रूप से अंत करने का प्रयास करते हैं कि लोक साहित्य के जरिए आम लोगों के जीवन के अलग अलग पहलुओं को मन को छू लेने वाले तरीके से दिखाया जाता है, जो मैथिली लोक साहित्य में विभिन्न लेखकों ने, विद्वानों ने किया है। और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों से भरा यह साहित्य न सिर्फ मिथिला के लोक जीवन का बल्कि भारतीय जीवन शैली और लोक संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व साहित्य माना जा सकता है। धन्यवाद। Thank you so much for the interesting talk. So our next speaker is Arya Kashyap. She is a student from Department of Music, SM College, TMBU. She will be presenting on the topic Bharatiya Sanskriti or Lok Geet. उपस्थित सभी हमारी आदरणीय प्रोफेसर मैम, चीफ गेस्ट तथा आए हुए सभी आदरणीय
अपनी प्रस्तुति भारतीय संस्कृति एवं लोकगीत को लेकर। मुझे यह अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आपके सामने में कुछ जो मैंने कलेक्ट किया है, मैंने पढ़ा है, मैं उसको आपके सामने में रखूं। इसका पूरा श्रेय मेरी HOD मैम को जाता है, डॉक्टर अमृता प्रेमवदा मैम को। वो भी यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति और लोकगीत। भारतीय संस्कृति एवं लोकगीत जो संस्कृति का प्राण तत्व है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम, समृद्धतम जीवन संस्कृतियों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस विविधता में एकता है, जिसकी नींव वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे महान आदर्शों पर टिकी हुई है। इस विशाल संस्कृति के प्राण में लोकगीत बसते हैं। इसकी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति इस लोकगीतों में मिलते हैं। लोकगीत केवल संगीत नहीं है, बल्कि यह सरल हृदय वाले आम जनमानस के हृदय की धड़कन, उनके संघर्ष एवं सुख दुख, आशा निराशा, भक्ति और उल्लास की सामूहिक आवाज है। जहाँ शास्त्रीय गीत बहुत कड़े नियम व्याकरण के थ्रू बंधे होते हैं, वहीं लोकगीत उन्मुक्त आकाश की तरह स्वतंत्र होते हैं। इनमें मिट्टी की सौंधी खुशबू और पूर्वजों का आशीर्वाद समाहित होता है। यह अपनी सहजता एवं सरलता के लिए जाने जाते हैं। हमारे अध्ययन का उद्देश्य है कि हम विद्यार्थियों में लोकगीत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करें। लोकगीतों के माध्यम से विद्यार्थियों में प्राकृतिक ज्ञान को निखारना एवं लोकगीतों के माध्यम से हमारी लुप्त हो रही संस्कृति संस्कारों को फिर से नए रूप में उजागर करना। लोकगीत आखिर में क्या है, हम इसको किस तरीके से जान सकते हैं। लोकगीत दो शब्दों से बना हुआ है, लोक एवं गीत। लोक मनुष्य का स्वसमाज जो अभिजात संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा में जीवित रहता है। इसी प्रकार गीत शब्द का अर्थ प्रायः उस कृति से है जो गेय है, जिसे गाया जाना है। यह एक भाव है, खुशी, प्रेम या भक्ति जैसे किसी भी भाव को व्यक्त करता है। अर्थात यह शब्दों, स्वरों, तान, लय, भाव, उच्चारण का समायोजन है जिसे गाया जाता है। भारतीय विचारकों एवं विद्वानों द्वारा भारतीय संस्कृति एवं लोकगीतों का अध्ययन करते हुए तत्संबंधी गहन विचार व्यक्त किए गए हैं, जो इस प्रकार है। देवेंद्र सत्यार्थी, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। सत्येंद्र, निर्माता के निर्माण के अहम चैतन्य से शून्य होने पर लोकाभिव्यक्ति होती है। आचार्य हजारी प्रसाद हुए, ग्राम गीत आर्येतर सभ्यता के वेद हैं। भारत में लोकगीतों की सूची कई सारी है। जैसा हम जानते हैं, हमारे भारत देश में कई सारी भाषाएं हैं, कई सारी क्षेत्रीय विविधता है। हर क्षेत्रीय विविधता से हर एक भाषा उत्पन्न होती है और हर भाषा में हमारी लोकगीत है। मनुष्य अपने भावों को, जो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उनको गाकर व्यक्त करते हैं, खुशी में बहुत उल्लास के साथ व्यक्त करते हैं। उस व्यक्त करने के माध्यम को भी हम लोकगीत कह सकते हैं। जैसा कि कल मैम लोगों ने बताया, यहाँ पर उपस्थित है सारी मैम ने, कि हमारे लोकगीत को हम अपनी पहचान बनाते हैं और हमारी यह पहचान है। जैसा कि हमारे जो एग्जामिनर मैम है डॉक्टर लावण्य मैम, एक्चुअली वो हमारी एग्जामिनर भी रही है। जब मैं सेमेस्टर्स की एग्ज़ाम देती हूँ तो वो एग्ज़ाम मेरे आती है, तो थोड़ा डर लगता है यहाँ पर, बट उनके द्वारा कही हुई बात है कि भोजपुरी जो हमारी लैंग्वेज है उसमें कई तरह के वर्डिंग्स ऐसे उन्होंने मतलब अभी के लोगों ने डाल रखे जो हम गाने लायक नहीं होते या फिर फैमिली के सामने बैठकर नहीं सुन सकते ना सुना सकते हैं। लेकिन ये हम युवाओं का कर्तव्य है कि हम उस क्षेत्र में भी उनको सुधार करें, कि हम उस चीज़ को इस लायक बनाएं कि वो हमारी पहचान बने और
गा सके, समझ सके। जो हमारी दादी नानी है, मैम बताती है, यहाँ पर उपस्थित है दोनों मैम और भी मैम सिर्फ जो जिन्होंने कल बताया कि जो हमारी दादी नानी है उनसे अगर हम अभी तो एकल तो जो हमारी दादी नानी है तो अगर हम उनसे भी मिलजुल कर बातें करें तो मैंने देखा है कि उनको भी बहुत अच्छी लोकगीत आती हैं। वो इतने खूबसूरत तरीके से समझाती है, बयान करती है कि हमें उनसे बहुत कुछ सुनने सीखने को मिलता है। धन्यवाद और नमस्कार। Thank you so much, Arya, for your interesting talk. Now, our next speaker is Dr. Rupa Kumari, Assistant Professor from SSV College, Kehelgaon, TMBU. I think she is not present over here. So, moving on to our next speaker, Antara Roy, Research Scholar from Department of History, Jayaprakash Narayan University, Chhapra. She is also not here. So moving on to our next speaker, Dr. Pankaj Kumar, Assistant Professor from Mathematics Department, TMBU. I think he is not present over here right now. The next speaker is Dr. Shalini Sharma, Assistant Professor from Music Department, Patliputra University, Patna. Dr. Shalini Sharma, Assistant Professor. I think she is not present over here. Is Dr. Ranjita. She is HOD in Music Department from Government Women's College, Patna. She will be presenting on the topic लोक कलाओं के उत्थान के लिए सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं का योगदान. Very good morning. इस सेमिनार सभा में आए हुए सभी विद्वज्जन को मेरा प्रणाम और स्कॉलर्स को प्यार। मेरा आज का टॉपिक है क्योंकि चीज़ें जो हमारी हैं सांस्कृतिक विरासत लुप्त होती जा रही है। मेन हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति में लोक कलाओं का बदलता स्वरूप। तो चीज़ें जो बदल रही हैं तो लोग अपने कलाओं के प्रति उदासीन हो रहे हैं क्योंकि कलाकारों की आर्थिक स्थिति जो है बहुत बुरी होती जा रही है। तो सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं कलाकारों के लिए। जो लोक कलाएं विलुप्त हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, पीढ़ियां जो हैं अपना आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए अपने रोजगार को बदल रहे हैं। तो सरकार ने उसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं मैं उस पर चर्चा करूँगी।
भारत की लोक कलाएं हमारी सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग हैं। नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इन कलाओं को संरक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इनका प्रदर्शन नहीं किया गया तो ये कलाएं आधुनिक युग के अंधे दौर में विलुप्त हो जाएंगी। भारत में लोक कलाकारों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। कला विशेषज्ञों के होते हुए भी प्रतिभाओं का मूल्यांकन सही रूप से नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रतिभाशाली कलाकारों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपनी आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए अपनी जीविका का मार्ग बदल रहे हैं, जिससे हमारी पारंपरिक लोक कलाएं विलुप्त होती जा रही हैं। लोक कलाओं के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोक कलाकारों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे संस्कृति मंत्रालय की लोक कला विकास योजना तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आदि। इन योजनाओं के अंतर्गत लोक कलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और प्रदर्शन के अवसर प्रदान किए जाते हैं। भारत में लोक कलाओं के उत्थान में सरकारी मंत्रालयों, सांस्कृतिक केंद्रों और गैर सरकारी NGOs, निजी संस्थाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। लोक कलाकारों को सरकार वित्तीय सहायता एवं मंच प्रदान करती है, जबकि गैर सरकारी संस्थाएं प्रशिक्षण, बाजार लिंकेज, दस्तावेजीकरण के माध्यम से लोक कलाकारों को सशक्त बनाती हैं। यह कलाकारों के संरक्षण, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान के लिए आवश्यक है। लोक कलाकारों के लिए सरकारी योजनाएं जैसे लोक कला विकास योजना, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, राष्ट्रीय लोक कला अकादमी, लोक कला संस्थान इत्यादि उपयुक्त इन प्रयासों से इन कलाओं को दर्शकों तक और हमारी जो प्राचीन परंपराएं और कलाएं हैं तो इन्हें दर्शकों तक पहुंचाने में हमें काफ़ी मदद मिल रही है। इससे लोक कलाकारों को अपनी कलाओं को पेश करने के नए अवसर भी मिल रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने कला और कलाकार तथा अपनी संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति एवं फेलोशिप योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का आवेदन के माध्यम से सभी लोक कलाकार लाभ उठा सकते हैं, जिसमें ऑक्टेव अनुसंधान और प्रलेखन, शिल्पग्राम और युवा प्रतिभाशाली कलाकार योजनाएं इनमें शामिल हैं। इन योजनाओं का आवेदन के माध्यम से लोक कलाकार लाभ उठा सकते हैं। लोक कलाओं के उत्थान में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान। वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत वरिष्ठ कलाकारों को सहायता राशि 3,000 रुपये प्रति माह राज्य स्तर पर दिए जा रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा योजना, इसके अंतर्गत अनुभवी कलाकारों के द्वारा परंपरा को बनाए रखने के लिए नए कलाकारों को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। अटल कला भवन निर्माण योजना, इसमें 620 दर्शक क्षमता वाले आधुनिक अटल कला भवन का निर्माण कराया जा रहा है। सांस्कृतिक केंद्र, सरकार के द्वारा हर जगह सांस्कृतिक केंद्र स्थापित कर क्षेत्रीय कलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। मंच प्रदान करना, त्योहारों और महोत्सवों के माध्यम से कलाकारों को प्रदर्शन का अवसर और मार्केटिंग में सहायता दी जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हो रहा है। जन जागरूकता अभियान, भारत स्वच्छ भारत अभियान तथा अन्य अभियानों के द्वारा लोग कलाकार की कलाओं का उपयोग करते हैं, उन्हें मंच प्रदान करते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा कलाकारों को अच्छी राशि दी जाती है। गैर सरकारी योगदान, जो NGOs के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यशालाएं, NGOs और कुछ संगठन कलाकारों को आधुनिक कौशल और नई तकनीक सिखाते हैं, जो कार्यशालाओं के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। दस्तावेजीकरण, NGOs और कुछ संगठन लुप्त हो रही कलाओं का वीडियो, ऑडियो और लिखित रिकॉर्ड तैयार करते हैं और इस प्रकार उन्हें संरक्षित करते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोक कलाकारों को वैश्विक पहचान दिलाना। सामूहिक प्रयास, बड़े बड़े मंदिरों, संगठनों के माध्यम से एक एक लोक कलाओं को गोद लेकर उन्हें उन लोक कलाकारों को प्रोत्साहित और उन कलाओं को संवर्धित किया जा रहा है, जो काफ़ी सराहनीय है। पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर देश के ऐतिहासिक स्थान को महत्वपूर्ण बनाना। यह प्रयास न केवल कला को जीवित रखता है, बल्कि कलाकारों की आर्थिक अवस्था को भी
योजनाओं की सहायता राशि प्राप्त करने के लिए पंजीयन पोर्टल पर कलाकारों को पंजीयन कराना आवश्यक है, जिससे इसका लाभ कलाकारों को मिल सके। इस प्रकार सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से कलाकारों और कलाओं का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है, जिससे लोक कलाओं की विरासत भविष्य में पुष्पित और पल्लवित होती रहे और नई पीढ़ी को इसका लाभ मिल सके। निष्कर्ष के तौर पर सरकार लोक कलाकारों को आर्थिक और राष्ट्रीय पहचान प्रदान करवाती है, जबकि गैर सरकारी संगठन इन कलाओं का व्यवसायीकरण कर कलाकारों को आत्मनिर्भर और नई पीढ़ी के बीच इनकी प्रासंगिकता बनाए रखने का कार्य करते हैं। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for your insightful talk. So if any speaker who are present and has not yet presented may kindly come forward. If any speaker are present who has not yet presented. So I think there are no other presenters present. So for the today's session, it has been a truly enriching experience with a range of insightful presentation covering diverse aspects of the international theme of the seminar, that is changing trends of folk art of India. This discussion reflected how traditional art forms continue to evolve while retaining their cultural essence. I would like to express my sincere gratitude to our respected chairperson, Dr. Anuradha Prasad, for her thoughtful observations which have added great depth to the session. I now invite Dr. Anuradha Prasad ma'am for her valuable remarks on the session. इस विशाल सभागार में उपस्थित हमारे सभी विद्वतजन जो इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी से जुड़े हैं, जो संगीत विभाग से संबद्ध है मुख्यतः, और हमारे इस सुंदरवती महिला महाविद्यालय की सभी शिक्षिकाएं, बाहर से आए हुए सभी अतिथि और मीडिया से जितने भी लोग आए हैं, मैं एक बार फिर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कल हमारा जो सेशन था वो हमने आप लोगों का स्वागत किया, सत्कार किया, बहुत सारी बातें संगीत के विषय में हमने जानी और हमने ये कोशिश की कि हम अपने भागलपुर के कल्चर को, भागलपुर के जो हमारा विचार यहाँ का है, हमारे डांस वगैरह से हमने कोशिश की कि आप सब वो देखें कि भागलपुर में हमारा कैसा कल्चर चल रहा है, हमारी कैसी संस्कृति चल रही है। और इसके बाद हमने सारे सेमिनार को, जितने भी लोग पार्टिसिपेंट थे, उसको हमने कई सेशंस में डिवाइडेड कर दिया और आज ये जो पहला सेशन है जिसमें बहुत सारे लोग जो आउटसाइडर हैं उन्होंने अपने अपने विचार रखे और सबके विचार बहुत अच्छे थे और लोक कलाओं पर जो इनका विचार था काफ़ी सारगर्भित प्रयास था उनका। और हम ये जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में लोक कलाओं का बड़ा ही महत्व है और आज जो समय बदल रहा है उसमें हम ये जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में लोक कलाओं का बड़ा ही महत्व है और आज जो समय बदल रहा है उसमें लोक कलाएं इसी तरह से बदलती ही जा रही हैं। हमारे जो प्रमुख प्रवक्ता थे, जिसमें कि सबसे पहले जो प्रवक्ता थे वो अभिषेक और इन्होंने काफ़ी नए तरीके से ये बताया कि किस तरह से हम आगे बढ़ करके ये कर सकते हैं और इसको जो है सो डिजिटल मीडिया के माध्यम से कैसे लोक कलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे इनके विचार बहुत अच्छे लगे और ये काफ़ी प्रोग्रेसिव विचार थे और अभी जो ये बदलता हुआ ट्रेंड है उसमें किस प्रकार से हम लोक कलाओं को और आगे
चेंजिंग फ्रेंड्स के रूप में, क्योंकि आज हमारा विषय भी है, इसे हम रख सकते हैं और इनका प्रयास मुझे काफी अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत बधाई पेपर तैयार करने के लिए। और हमारी जो दूसरी कंटेस्टेंट थी सही, इन्होंने लिटरेचर और कल्चर पर अपने विचार रखे और एक बहुत ही सार्थक प्रयास किया। उन्होंने लोक संस्कृति को बताया और ये बताया कि हमारे ये जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं, हमारे जो विश्वास हैं, कला जो है हमारी, उसका प्रतीक ही होती है हमारी ये लोक संस्कृति। और हम इसे लोकगीतों, नृत्यों और जीवन से शैली से संबंधित करते हैं। ये बताते हुए उन्होंने बताया कि ये जो लोक लिटरेचर, पॉप लिटरेचर जो है वह पारंपरिक साहित्य है जो कि आम जनता के द्वारा रचा जाता है और इसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी ऑन करते जाते हैं और यह हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। बहुत ही अच्छा प्रयास इनका भी मुझे लगा। इसके बाद डॉक्टर संजय कुमार, जो कि पीजी इंग्लिश डिपार्टमेंट मगध यूनिवर्सिटी से हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं लोक परंपरा पर, ट्रेडिशंस पर, हमारे रीति रिवाज पर, मान्यताओं पर, लोकगीत, नृत्य, कहानियाँ और कलाएं, और इनका भी विचार काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद हमारे पास जो विचार आए वो जो कि जिन्होंने मैथिली पेंटिंग और मैथिली पर बहुत विचार प्रकट किए। और हम ये जानते हैं कि लोक कलाओं में मैथिली परंपराओं का बहुत महत्व है और हमारी ये जो सांस्कृतिक एकता है उसका यह आधार भी है। सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति भी इसमें होती है और इसी के द्वारा मूल्यों का संरक्षण होता है। रिसर्च स्कॉलर रश्मि सिन्हा के विचार भी हमने सुने और उन्होंने अपने विचारों में यह बताया कि किस प्रकार से रस्किन बॉन्ड के साथ उन्होंने इसको कंसर्न कर दिया, जोड़ दिया और यह बताया कि हिमालयी जो लोक जीवन है वो प्रकृति के साथ कितना गहरा संबंध रखती है और वहाँ के जो लोग हैं वो प्रकृति के साथ कितने गहरे तालमेल, सरलता और मेहनत से अपने कार्यों को करते हैं। रस्किन बॉन्ड के साथ उन्होंने जोड़कर एक बड़ा ही अच्छा पेपर तैयार किया है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देती हूँ। नित्यानंद मिश्रा, इसके बाद उनके विचार हमने सुने और उन्होंने ये लिखा कि मैथिली लोक साहित्य जो है उसमें उसे आज हमारे संविधान में शामिल कर दिया गया। ये बहुत ही बधाई की बात है। और लोक साहित्य जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी ऑन होते जा रहे हैं, हम उन्हें अपने में एक्सेप्ट करते हैं और लोकगीतों, लोक कथा और लोकोक्ति के माध्यम से हम इन्हें और आगे बढ़ाते ले जा रहे हैं। मैथिली लोक साहित्य तो आज भी हमारे यहाँ बहुत ही लोकप्रिय है और बहुत सारी परंपराएं हम उनसे सीखते आए हैं। आर्या कश्यप जो कि यहाँ की स्टूडेंट है SM कॉलेज, उन्होंने भी एक अच्छा रिसर्च पेपर तैयार किया है और यह बताया है कि भारतीय संस्कृति और लोकगीत विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। और एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि वसुदेव कुटुंबकम, हम सब एक हैं, एक ही जगह रहते हैं और सारा संसार हमारा है। उनका यह विचार बड़ा ही उत्तम है। उन्होंने बहुत सारे लोगों का नाम दिया, बहुत सारे ऐसे लेखकों का नाम लिया, देवेंद्र सत्यार्थी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सब से हमारी पहचान बनी है और लोक कलाएँ और आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं। सबसे अंत में हमने सुने डॉक्टर रंजीता जो HOD गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज से हैं। उन्होंने अपने पूरे इस रिसर्च वर्क में ये बताया कि भारतीय संस्कृति में लोक कलाओं का स्वरूप किस प्रकार से बदल रहा है और हमारी सरकार जो लोक कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस किस प्रयास से गुजर रही है। हमारी पारंपरिक लोक कलाएँ जो आज विलुप्त हो रही हैं, लेकिन हमारी सरकार ने यह प्रयास किया है कि लोक कलाएँ और आगे बढ़ती रहें। कई प्रकार के प्रयास NGO के द्वारा किए गए, कई प्रकार के प्रयास, ऑनलाइन प्रयास, कई कलात्मक अभिव्यक्तियाँ और कई प्रकार के सेमिनार इसी विषय में आयोजित किए जा रहे हैं। यह आज का जो सेमिनार है वह इसी से संबंधित है
और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि ये जो सेमिनार है वह एक सार्थक प्रयास हमारा सिद्ध होगा। लोक कलाएं जो आज विलुप्त होती जा रही हैं, पारंपरिक रूप में जो लोक कलाएं हैं उनको कैसे और आगे बढ़ाया जाए, उनका जो स्वरूप बदल रहा है, इस बदलते स्वरूप को हम और आगे बढ़ाएं और अपने पारंपरिक लोक विलुप्त न होने दें। अगर हम इतना कर पाएंगे तो इस सेमिनार की सार्थकता होगी और यही इस सेमिनार का मुख्य विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से सुनने के लिए और इतने अच्छे पेपर्स तैयार करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for your insightful conclusion and encouraging remarks for each and every speaker. It was really very encouraging. And now I would like to conclude this session by thanking all the speakers for their well presentation, and also I would like to thank all the participants for their active participation. And now I would like to thank Dr. Chaitanya ma'am who for documenting the session as reporter, and also I would like to now conclude this session, and now we will meet for the next session. With this, the session is closed. Thank you so much. Thank you.